So, chemistry of organic halides. Let's start with methods of preparation of alkyl halides. So, in this topic, we will study the alkyl halides as well as the aryl halides. So, first we took the alkyl halides. What are alkyl halides? These are organic compounds having one halogen attached to a carbon group. So alkyl halides are organic compounds with a hydrocarbon group or carbocation group attached to one halide. Example जैसे R represents the alkyl group and I represents iodine or a halogen. They are generally prepared by 5 simple methods. So their preparation methods are very simple. I have made a very small code folder AAA-MH, but we have certain doubts with AAA. So I included ATSH. The AAA represents the preparation methods with the help of alcohol. M represents the methane and the H represents the Huns-Dicker's reaction. So when we talk about the first A, it is for hydrogen halide. Hydrogen halide here. Another A represents the reaction with thionyl chloride or SOCl2, and the last one represents the reaction with TPP, triphenyl phosphate. So for that, I included the TSH code. The first one represents the thionyl chloride or TPP. It is TPP, sorry. The another one is thionyl chloride or SOCl2, and H represents the hydrogen halide. So let's see the reaction. Alcohol with hydrogen halide. What happens here? What is the catalyst used? Catalyst for hydrogen halide reaction is anhydrous ZnCl2. Here alcohol is reacted with hydrogen halide and it forms RX and H2O. I will include some rough videos for direct reaction. Let's just understand the reaction here. So another reaction, alcohol plus thionyl chloride SOCl2. So what happens? What is the catalyst? Catalyst is pyridine. Here ROH is reacted with SOCl2. The R forms bond with Cl and it forms RCl. Here the SO takes one oxygen from here and forms SO2, and the remaining H, it forms bond with Cl and forms HCl. The third reaction is alcohol with TPP or triphenyl phosphate. So TPP is basically 3 phenyl groups attached to one phosphorus, POC6H5, POC6H5 and POC6H5. The catalyst or another reactant used here is bromine, Br2. So here we can see ROH, it reacts with TPP and Br2. So basically R forms bond with Br, RBr. Then the OH, it comes with C6H5. So C6H5OH here, C6H5OH, and the another Br forms bond with oxygen here. So the another product we get here is POBr, POC6H5 and OC6H5. So let's talk about the fourth method of preparation. The fourth method is a reaction with methane. So मीथेन के साथ रिएक्शन के वक्त क्या होगा? CH4 होगा. यहाँ पर कैटलिस्ट तो नहीं होगा लेकिन UV लाइट सनलाइट यहाँ पर रखा जाएगा. CH4 plus Cl2 CH3 Cl and HCl. Very simple reaction. Then we talk about the Huns-Dicker's reaction. So Huns-Dicker reaction में क्या होता है? सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड होता है जिसको ब्रोमीन के साथ Br2 के साथ रिएक्शन करवाया जाता है. फिर वो जो होता है ये CO2 बन जाता है, ये वाला पार्ट AgBr बना देते हैं और RBr. So it is very simple reaction. The Huns-Dicker reaction is also present in preparation of aryl halides, just for knowledge. Okay.
Then let's rough this reaction. So I made a small code there for preparation of alkyl halides, that is AAA-MH, but it is very confusing and doubtful. The A represents the alcohols, reaction with alcohol, M represents methane, and the H represents Hunts-Dicker's reaction. Now let's talk about the AAA. Here another small code TSH. So reaction of alcohol with T means TPP, triphenyl phosphate. Reaction of alcohol with S means reaction with SOCl2 or thionyl chloride, and the reaction of alcohol with H represents reaction with hydrogen halide. So let's see the first reaction. The first reaction is reaction of alcohol with let's see TPP or triphenyl phosphate, that is TPP is C6H5, that is called triphenyl phosphate, plus Br2. So what are the products that will be formed? So products that formed in this reaction are RBr, that is our alkyl halide, plus POBr, OC6H5, OC6H5, plus the remaining one, that is the C6H5 group, and the O that is remained C6H5OH. So that is our product for reaction of alcohol with triphenyl phosphate. The second reaction is alcohol with S, that is alcohol plus SOCl2 or thionyl phosphate. Here the catalyst is pyridine. So alcohol, let's say ROH. So R of course is from RCl, plus SO takes one of the oxygen and forms SO2, and the remaining Cl forms bond with H and forms HCl. So let's see the third reaction, that is alcohol with H or alcohol with hydrogen halide, HX, let's say. So here catalyst required is anhydrous ZnCl2. It forms RX, that is alkyl halide, plus remaining H2O. That's it. Let's see the fourth reaction. The fourth reaction is from M, methane. Reaction with methane is CH4 plus let's say hydrogen halide, reaction of methane with let's see example of Br2 and little bit of sunlight, then it forms not Br2, let's Cl2, which is more reactive, CH3Cl plus HCl. So that's it. Let's go with the fifth reaction, that is Hunts-Dicker's reaction. So in Hunts-Dicker reaction there is a silver salt of fatty acid, that is CS3COOAG, plus of course here Br2 is present. In this reaction Br2 is present, and the catalyst required is CCl4. So COO, this forms CO2, Ag reacts with Br to form AgBr, and the CS3, of course we get our CS3Br. So what are the products? CS3Br, that is our alkyl halide, plus CO2 plus AgBr. So that's it for preparation of alkyl halides. Now let's talk about the second topic, that is the general properties of alkyl halides. So
they have very simple general properties. The first one is their solubility. They are insoluble in water but are soluble in organic solvents. Second property and third property are very well related. The second property is related to their boiling point. They have very high boiling point. Why? Due to polarity. Uh, du- uh, that is why their boiling point is much more higher when compared to uh, hydrocarbon of same molecular mass. The third property is very similar to the first property and is related to the polarity, and that is the due to polarity with increase in molecular mass, their boiling point also increases. And the fourth one is related with reaction with sunlight. So the chlorides or iodides, when they react with sunlight, they release iodine gas. Okay, so alkyl iodides when exposed to the sunlight releases iodine molecules, so Ri, Rr and I2. So that's it for physical properties. So we have four physical properties. Two are related with the polarity as well as the boiling point. One is related with the solubility and one is related with reaction in exposure with sunlight. So let's talk about the chemical properties. Chemical properties basically deals with the chemical reactions that they show. So when we talk about the alkyl halides, they show seven types of reaction. They have so many reactions, but seven most common type of reaction or famous reactions. The first one is the which is also in our syllabus, substitution reaction. SN1, SN2, it can be any type. Another one is the elimination reaction, which is also of two types, E1 and E2. Then we have reaction with metals or Grignard formation reaction, Grignard reagent, where Grignard reagent is formed. The fourth and the fifth reaction are little exceptions. These are chloritone formation reaction. Chloritone is chloroform plus acetone. Then we have the fifth reaction, which is ammonium salt, quaternary ammonium salt formation reaction. These two reactions are here. These two are exception reaction. And the last two reactions, these are coupling reaction. I call them coupling reaction because a little bit of coupling takes place. These are Wurtz reaction, Wurtz fitting reaction, Wurtz reaction here. And another one is the Zncu coupling reaction. So these two reactions are quite similar, so that's why I included them in the last. So let's talk about the first reaction, substitution reaction. तो क्या होता है substitution reaction में? बेसिकली यहाँ पर हम एक हाईली नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन करवाते हैं हमारे अल्काइल हैलाइड का. वो जो न्यूक्लियोफाइल होता है जैसे कि OH माइनस, इट टेक्स आउट द X, उसको सब्सटीट्यूट कर देगा एंड इट बाइंड्स विद R, यानी कि अल्काइल ग्रुप से वो बाइंड हो जाएगा और एक नए स्पीसीज का फॉर्मेशन करेगा, या दैट इज अल्कोहल. तो सब्सटीट्यूशन ऑफ हैलाइड फ्रॉम अल्काइल हैलाइड बाय स्ट्रॉन्ग नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल लाइक OH माइनस. एग्जाम्पल RX है, OH ने X को रिप्लेस किया और बना दिया ROH और X माइनस जो है वो निकल गया. इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स. ये जो रिएक्शन है ये दो अलग अलग मैकेनिज़्म से फॉलो अप होता है, SN1 और SN2. SN1 का मैकेनिज़्म, इसमें जो रिडिटरमाइनिंग स्टेप है यानी कि फर्स्ट स्टेप, इसमें दो स्टेप्स होते हैं. इसमें कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है. वहीं SN2 में एक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है, वहाँ पर कार्बोकेटाइन नहीं फॉर्म होता और उसमें सिंगल स्टेप होता है. यही फ़र्क होता है और प्रोडक्ट में इन्वर्जन आ जाता है SN2 रिएक्शन में. फिर बात करते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन की. एलिमिनेशन रिएक्शन इट इज़ ऑल्सो टू टाइप E1 एंड E2, बट हेयर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KOH इज रिएक्टेड. और यहाँ पर भी ये सेम ही है, लेकिन यहाँ पर जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो डिफरेंट होता है. बेसिकली द अल्काइल ग्रुप फ्रॉम द अल्कीन एंड H2O इज़ आल्सो फाउंड है. तो यहाँ पर एक
अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन करते हैं, एक H निकाल देते हैं। मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन का मतलब ही होता है कि मोर देन वन एलिमेंट्स और ग्रुप्स आर एलिमिनेटेड, एक से ज़्यादा को हटा दिया जाता है, एक से ज़्यादा एटम्स को हटा दिया जाता है और डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है जो मेन हाइड्रोकार्बन ग्रुप है। सो जैसे RX है, हमने इसको एक्वस के साथ रिएक्ट करवाया तो देखिए KX ये अलग हो गया, K ने X को अलग कर दिया। OH जो है ये H2O ले लेगा, OH जो है एक यहाँ से हमारे हाइड्रोकार्बन ग्रुप से एक हाइड्रोजन ले लेगा और H2O बना लेगा, और जो R है ये अनसेचुरेटेड हो जाएगा। तो एग्जांपल के लिए मैंने लिखा भी है CH3CH2Br KOH, CH3CH2 जो है CH2CH2 बन गया डबल बॉन्ड के साथ, KBr अलग हो गया और H2O का फॉर्मेशन होगा। इसको डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं, शायद मुझे ठीक से याद नहीं, लेकिन शायद इसी को ही कहते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन कैन बी यूनिमोलिकुलर यानी कि E1 और बाई मोलिकुलर होगा तो E2। अब आते हैं थर्ड रिएक्शन में, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्मेशन रिएक्शन। सो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन में क्या होता है, ये एक मेटल रिएक्शन है। जैसे हमारा RX है, हम इसको Mg के साथ रिएक्ट करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इट फॉर्म्स RMgX, वेरी सिंपल रिएक्शन। लेट्स टॉक अबाउट द फोर्थ रिएक्शन. So the fourth reaction is I will avoid the Woods and the Zncu coupling reaction for the last. Let's say fourth reaction is क्लोरीटोन फॉर्मेशन रिएक्शन. तो क्लोरीटोन फॉर्मेशन रिएक्शन में क्या होता है, क्लोरीटोन का फॉर्मेशन होता है, सिंपल। क्लोरीटोन क्या होता है, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन। क्लोरोफॉर्म CHCl3 है, एसीटोन C डबल बॉन्ड O विथ C डबल बॉन्ड O विथ 2 CH3 ग्रुप्स और R ग्रुप्स। सो यहाँ पर क्या होगा, ये जो O है इसके साथ एक H जुड़ जाएगा और ये वाला जो बॉन्ड से एक ये CCl3 ग्रुप आ जाएगा, तो एक ऐसा कुछ अजीब सा स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसको क्लोरीटोन कहते हैं। सो sorry for the sound. So the reaction is very simple and straightforward. Here chloroform is an alkyl halide. हाँ, क्लोरोफॉर्म अल्काइल हैलाइड का एक एग्जांपल है। इट रिएक्ट्स विद एसीटोन फॉर्मिंग OH containing क्लोरीटोन. Let's talk about the ammonia quaternary ammonium salt formation reaction. It is a chain reaction. चेन रिएक्शन नहीं बोलेंगे लेकिन काफ़ी अच्छा रिएक्शन है। क्या होता है इसमें, अमोनिया क्या होता है NH3. When we react ammonia with alkyl halide like RBr के साथ हमने NH3 का रिएक्शन कराया, ये जो है NH3 ये Br को हटा देगा और खुद जुड़ जाएगा R. So R forms bond with NH2, one of the H forms bond with Br and forms RNH2Br. In the second reaction we react RNH2 again with RBr. So here R2 and NH, one of the H again comes out, R2NH and HBr. In the third reaction we react R2NH with RBr once again. So here the RBr is main reactant, NH3 is reactant for only first step, then we react RBr in second, third and fourth step. So R2NH RBr, then we found R3N plus HBr. In the fourth reaction we have R3N plus RBr and R4 minus N plus NBr. This is the quaternary ammonium salt. Let's talk about the coupling reaction, the Woods reaction. So in the Woods reaction, here we see it reacts with 2Na forming RR coupling, ऐसा कुछ होता है उसमें. alkyl halides react with sodium for coupling alkyl groups. So 2RX it reacts with 2Na then forms RR and 2NaX. Basically Woods reaction sodium with the halide, ऐसे कुछ सिंपल सा रिएक्शन होता है. Zncu coupling reaction is little bit interesting क्योंकि ये Woods रिएक्शन जैसा नहीं होता है. जैसे हमको यहाँ पर 2Zn लेना पड़ता है. So we have taken 2RX 2Zn, तो Zn का 2 प्लस होता है, यानी कि ये
दो R से भी बाइंड हो सकता है, दो X से भी बाइंड हो जाता है। तो ये जो Zn है ये R Zn बना देगा, R2Zn, और दूसरा वाला जो Zn है वो X के साथ रिएक्ट करेगा और बना देगा ZnX2। सो हेयर वी हैव एग्जांपल 2C2H5Cl + 2Zn। 1Zn रिएक्ट्स विथ, एक जो जिंक है वो अल्काइल ग्रुप के साथ रिएक्ट करेगा और एक जो है वो हैलाइड ग्रुप के साथ। और चूँकि Zn का 2+ में होता है, यानी 2+ होता है, यानी कि ये दो जो है दो मॉलिक्यूल्स के साथ इनके साथ बाइंड हो सकता है एक बार में। सो दैट्स इट। लेट्स गो फॉर सम rough explanation of these reactions. So chemical reactions of alkyl halides. Alkyl halides, there are 7 major chemical reactions. The first one is substitution reaction. तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, SN1 होता है, SN दो टाइप के होते हैं ये। यहाँ पर एक न्यूक्लियोफाइल जो है वो सीधा अटैक कर देता है हमारे अल्काइल हैलाइड पे। न्यूक्लियोफाइल जैसे कि OH- है, ये अटैक करेगा और फॉर्म करेगा ROH, दैट इज़ अल्कोहल, प्लस X- जो है वो अलग हो जाएगा। इट इज़ ऑफ टू टाइप, SN1 और SN2, यानी दो अलग अलग मैकेनिज्म होता है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। सेकंड जो होता है इसी में वो है एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन इज़ वेरी वेल सिमिलर टू द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, लेकिन यहाँ पर अल्कोहल का फॉर्मेशन नहीं होता। यहाँ पर फॉर्मेशन होता है एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का, जैसे हमने लिया RX प्लस, यहाँ पर भी हमने मान लीजिए KOH के साथ रिएक्ट करवाया, ये भी एक न्यूक्लियोफाइल ही है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, R प्लस KX प्लस H2O, वन ऑफ द H इज टेकन फ्रॉम हेयर। जैसे हमने लिया एग्जांपल CH3CH2Br प्लस KOH। सो यहाँ पर क्या होगा, जब हम इसका ऐसा रिएक्शन करवाएंगे CH3CH2Br का, तो ये बना देगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस KBr प्लस H2O, one of that is taken from here. So there is a slight difference between the substitution and elimination. एलिमिनेशन में हमको याद रखना है कि वहाँ पर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन होता है और एक H2O जो है वो रिलीज़ होता है। द थर्ड रिएक्शन इज़ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्मेशन रिएक्शन और मेटल रिएक्शन विथ मेटल। सो यहाँ पर क्या होता है ग्रिग्नार्ड रिएक्शन में, जैसे हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, RMgX, हमारा RX है, इट रिएक्ट्स विथ Mg इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर and it simply forms RMgX. So that's it for the third reaction. And the fourth reaction is chloritone formation reaction. This is a unique reaction. So chloritone formation reaction में क्या होता है, हमारा क्लोरोफॉर्म CHLO से क्लोरोफॉर्म यानी CHCl3 और क्लोरीटोन बोल रहे हैं यानी एसीटोन क्या होता है CR डबल बॉन्ड O। तो यहाँ पर जो फॉर्म होगा, जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो होगा RCROH एक हो जाएगा, और दूसरा जो बॉन्ड है वो बना देगा ये CCl3। सो दिस इज़ आवर क्लोरीटोन। Now the fifth reaction is quaternary ammonium salt formation reaction. So quaternary ammonium salt formation reaction, इसमें क्या होता है, जो हमारा RBr है मान लेते हैं, यानी अल्काइल हैलाइड, इट रिएक्ट्स विथ
ammonia and forms R NH2 और एक जो H है वहाँ से HBr। अब जो सेकंड जो रिएक्शन होगा वो इसका होगा, ये एक चेन रिएक्शन टाइप का होता है, RnH2 और जो नया रिएक्टेंट ये RBr ही होगा, RBr। इट फॉर्म्स R2NH प्लस HBr। वैसे ही थर्ड रिएक्शन R2NH का होगा with RBr, it forms R3N plus HBr. Similarly, R3N plus RBr, and it will form R4N plus Br minus. So this is quaternary ammonium salt. So let's talk about the sixth reaction and the seventh reaction. These are the coupling reactions. So the sixth reaction is a Woods reaction, very simple reaction and famous reaction. So हमने लिया अल्काइल हैलाइड प्लस हमने किया 2Na, यहाँ पर 2 डाल सकते हैं, and it forms RR plus 2NaX. So that's it for Woods reaction. Let's talk about the seventh reaction, that is Zncu coupling reaction. So this is our RX alkyl halide plus 2Zn, and we know Zn 2 plus होता है, यानी कि ये जो Zn है ये एक बार अल्काइल ग्रुप के साथ रिएक्ट करेगा और ये एक बार हैलाइड ग्रुप के साथ, और यहाँ पर बन जाएगा 2R या फिर R2Zn प्लस ZnX2. So that's it, and we have covered the preparation of alkyl halide physical properties, and now we have covered the chemical properties of alkyl halides. Thank you.